इब्राहिम जी करीम भाई। ये नाम हमने अडॉप्ट किया है फ्रॉम आवर ग्रैंडफादर्स नेम who had established the company in 1921. He migrated from Kathiawar, then in India, to the city of Karachi in 1906. In 1921, he himself started the company, which was initially known by his own name, Mullah Ibrahim Ji Karim Bhai, which was later on converted and adopted as MEK. Initially, the company was one-man show. वो अपने हाथ से छोटी छोटी चीज़ें बनाते थे, कैश बॉक्स हो गए, फर्स्ट एड बॉक्स हो गए। पार्टीशन से पहले मोस्टली हम ये कैश बॉक्स और बाकी स्टील के बॉक्सेस बनाते थे। एक एग्जांपल्स यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये मेरे दादा के अपने हाथ का बना हुआ था। दादा का उसूल था कि हर चीज़ अपने हाथ से पहले सीखते थे और जब अपने फ़न को एक उरूज पे ले आते थे, उसके बाद वो अपने लोगों में तकसीम करते थे उसको। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यूसुफ है, यूसुफ मोहसिन पेटियाला। मैं एक MEK के अंदर डायरेक्टर हूँ। हमारा काफ़ी पुराना ग्रैंडफादर से फिर मैं वालिद साहब की तरफ आए। वालिद साहब हम लोग हैं और हम लोग इस प्रोडक्ट को, इस कंपनी को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। अब हमारे आगे बच्चे भी इसके साथ इंट्रोड्यूस हुए हैं और ये इनको और आगे लेके। Assalamu alaikum. By the grace of Almighty Allah Subhanahu and Dua Mubarak of His Holiness Ali Qadr Muqaddar Saifuddin Ta'amur Sharif. Today we are celebrating 100 years of our MEK family in the business. It is a long history. My great grandfather and my father Mohsin Bhai, who expired in 1980, and we brothers took over the business, and today we are achieving 100 years celebration. It is a long history, and myself, my father wished all children to be graduated, and I was also supposed to be a chartered accountant, but eventually due to my father's health, I have to support my family business. So I joined MEK. It was not easy for me, and I took it a challenge, and today what we are. We all started with hand making, and my father has a small manufacturing unit in a very troubled area of Karachi, Liari, but we managed to handle, and today we grow. 1921 से हमारे ग्रैंडफादर मुल्ला इब्राहिम जी करीम भाई MEK, उन्होंने ये कंपनी शुरू की थी और उस वक्त मुल्ला इब्राहिम जी करीम भाई खुद अपने हाथ से सारी चीज़ें काम कर रहे थे। उनके साथ फिर हम लोग, हमारे वालिद साहब वगैरह, फिर पार्टीशन के बाद हम लोग ने इसको एक मैकेनाइज कंपनी के तौर पे हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है। आई एम दी डायरेक्टर ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट here at MEK, and me along with my sales teams, we are responsible for handling all the customer inquiries, making sure the projects are executed smoothly, और जो भी हमारे sales targets होते हैं we try to meet them. MEK is a family business. मैं, मेरे भाई, हमारे elders, हम लोग सब साथ हैं इस business में, and I think being part of a family business with over 100 years of history, I think one of the values और जो चीज़ जो हमने सीखी है, that is how to work together. जाहिर सी बात है, एक फैमिली बिजनेस है, सब एक डिसीजन लेवल पे इन्वॉल्व होंगे फैमिली मेम्बर्स, तो डिफरेंसेस तो आएंगे। देयर विल बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन मैटर्स ऑफ फाइनेंस, ऑपरेशन, डिसीजन मेकिंग, इन्वेस्टमेंट। सो वी ट्राई टू, एंड आई थिंक वी हैव बीन फेयरली सक्सेसफुल कि हाउ टू वर्क टुगेदर, कम टुगेदर एज अ टीम एंड डिलीवर परफॉर्मेंस इन द मार्केट। Our smallest item was a toolbox, and heaviest item was the bank vault doors, and that was around 1000 kg we are making. We have a good laborers, skilled and unskilled, and we try to go to sell this product personally to all the clients, and there was no communication like emails or other. And the first thing was which I go in the business was a fax.
I visited many expos in China, Germany, Hong Kong, Dubai, which has given me a great openings where we are standing and where we should further improve ourselves. And my vision today, my children are fulfilling. After graduating from all the best universities, they have joined our family business. Today we have installed a new factory at an area of 50,000 square feet with new machines, and also had local and international certification for our products. And I see a huge potential to grow further. By late 50s, Unveiling Karim Bhai, the company had started to manufacture a large variety of products, as well as schools and other institutions. We started manufacturing filing cabinets, steel almirahs, steel racks, apart from making other products which were required by the industries. हम लोग जो प्रोडक्ट लाइन हम लोग ले रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, उसमें फाइनेंशियल सेक्टर है, लॉजिस्टिक्स सेक्टर है, उसके अलावा हम लोग आर्किटेक्ट्स वगैरह को हम लोग डील करते हैं कस्टमाइज प्रोडक्ट के लिए, और सारी चीज़ें जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होती है हम लोग बना के देते हैं। हम लोग इस तरह से अलहदा हैं सबसे कि अप टू द मार्क चीज़ें एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग बना के देते हैं। MEK is offering a broad range of products to the Pakistani market. हमारी जो target segment है जिसमें we are very active is pharmaceutical, FMCG industries, ये food, fertilizer, cement sector, power sector में हम लोग बहुत active हैं। जितने ये घारो, झिम्पी, सीपेक के जो projects install हो रहे हैं, थर्कोल वगैरह, तो उसमें हमारे regularly products जाते हैं। Similarly, we are very proud of the fact कि अभी recently हम लोगों ने तरबेला का जो JV 4th extension जो project अभी complete हुआ है in KPK, तो उसमें वी आर दी अप्रूव वेंडर। सो फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान जो उनके जो करीब शहर हैं, फ्रॉम पिंडी, लाहौर में से उन्होंने सारी चीज़ें स्टडी करके दे शॉर्ट लिस्टेड अस बेस्ड इन कराची, और यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट्स सप्लाई कर रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट, एंड ये जितने सीपेक के प्रोजेक्ट्स हैं और जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो हमें पैट्रोनाइज भी करते हैं, एंड वी आर अप्रूव वेंडर्स फॉर देम।